Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Yes, thank you, Vishal, and welcome, Dr. Yamini. We begin with a quick look at the headlines. Key domestic stock indices log marginal losses. Sensex closes near 54,200 points. Nifty slips below 16,250 level. Rupee weakens to 77 rupees and 58 paise against the dollar. And Brent crude prices hover around $114 per barrel. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में मामूली गिरावट दर्ज। सेंसेक्स 54,200 के करीब हुआ बंद, जबकि निफ्टी फिसलकर 16,250 के स्तर से नीचे आया। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 77 रुपये 58 पैसे के स्तर पर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $114 प्रति बैरल के आसपास। कार्यक्रम में बात सबसे पहले शेयर बाजार की। वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त मिले जुले संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में आज हल्की गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 54,200 के करीब बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,250 के स्तर से नीचे आ गया। सेंसेक्स 0.20% के नुकसान से 110 अंक लुढ़क कर 54,209 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19 अंक कम होकर 0.12% की गिरावट से 16,240 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.13% की गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.33% की बढ़त दर्ज हुई। The Sensex and Nifty today witnessed modest losses. Both indices fell amid mixed global cues from global share markets. The Sensex closed near 54,200 points, while the Nifty ended below the 16,250 level. The Sensex fell 110 points or 0.20% to finish at 54,209, while the Nifty declined 19 points or 0.12% to settle at 16,240. In the broader market at the BSE, the mid-cap ended 0.13% down, while the small-cap index finished 0.33% up. In the Sensex pack, shares of 13 out of the 30 companies gained. Hindustan Unilever and Ultratech Cement were top gainers, as both added 2% each. Asian Paints gained 1.7% and Sun Pharma climbed 0.8%. On the other hand, Power Grid tumbled 4.6% and Tech Mahindra plunged 2.1%. SBI declined 2% and Larsen Tubro fell 1.9%. In sectoral indices, 16 out of the 19 sectors logged losses. The FMCG sector surged 1.2% and healthcare gained 0.5%. On the other side, realty declined 1.8%, telecom fell 1%, while consumer durables and capital goods both slipped 0.6%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,866 companies gained, while 1,479 fell. Shares of 121 companies remained unchanged. Dr. Yamini, when we talk of, I think, volatility in the market, it's definitely very much there. But do you see some kind of a trend in the way the market is responding to external factors like, inflation or I think the continuation of the Ukraine war, which has now become long drawn? So do you see a pattern?
Well, we can see a pattern over here because overall volatility does come in as and when there are pressures of inflation and global supply chain bottlenecks which appear. And as and when the crude oil prices tend to rise because of the demand rising and the supply side being somewhere or the other restrained, thereby we do see that it affects the stock markets as well, primarily because the inflation pressure, as we can see in the WPI digits, which is a double-digit factor, is going to be percolating in all the other goods, especially food or others, and thereby we do see that it affects the stock markets. Right. जी डॉक्टर यामिनी, कल अगर हम सेंसेक्स के प्रदर्शन की बात करें तो 1300 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज की गई थी कल सेंसेक्स में। ये बढ़त के पीछे क्या वजह आपको दिखती हैं? और आज हालांकि हम सेंसेक्स के प्रदर्शन को देखें तो 236 अंक की बढ़त के साथ खुला था जरूर, लेकिन बाद में जो उसने जो फायदे थे वो गंवा दिए अपने। ये जो कल की हम बात करें तो कल जो 1300 अंकों की से ज्यादा की जो बढ़त थी, इसके पीछे क्या कारण आपको दिखाई पड़े? जी देखिए, ओवरऑल मार्केट्स में जैसे ही लो बाइंग होती है वैसे ही सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेयर्स आ जाते हैं जो खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो वो हाइज एंड लोज की होती है, पर जहां पर जो प्रेशर बनाते हुए सेंटिमेंट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन के फैक्टर्स ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कल जो फिगर आई वो बाद में आई, उसका जो है सीधा असर हमें आज के आंकड़ों पे नजर आ रहा है। और जो दूसरा असर हमें नजर आ रहा है कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है चाइना के अंदर वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो बढ़ सकती है और उसकी जो प्राइसेस बढ़ेंगी उसका सीधा असर जो है हमारे इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। तो ये प्रमुख कारण है गिरावट के, और जो मुख्य तौर पे कारण रहे हैं बढ़त के वो रहे हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स में स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें तो मार्केट्स के ग्रोथ रेट्स को देखें या रिफॉर्म प्रोसेसेस को देखें, वो सभी एक स्ट्रेंथ दिखाते हैं। जो आईपीओ भी आना है, जो आईपीओ की लिस्टिंग भी है, वो भी एक तरह से प्रदर्शित करता है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है मार्केट की तरफ। जी, आपने आईपीओ की बात करी तो एलआईसी का जो आईपीओ आया उसका जो जिन लोगों को शेयर अलॉट नहीं हुए और उनका जो रिफंड आया, क्या वो रिफंड का पैसा भी कल मार्केट में लगा? जी बिल्कुल, जो मार्केट में जिन लोगों को अलॉट नहीं हुए उनका भी पैसा जो है मार्केट में ही लगा होगा क्योंकि वो निवेशक हैं और वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। एलआईसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई थी तो उन्होंने उसमें निवेश करने की कोशिश की, पर जहां पे पैसा नहीं लग पाया वो उसे और ऑल्टरनेटिव्स में लगाएंगे। Right. Dr. Yamini, while on the subject of the LIC IPO, do you think that the good old days of investing in IPOs and people getting thrilled that they got their shares and, it was like, I think the realistic pricing of IPOs, do you think those days are over with these, of course, LIC is not a new company, but a lot of new IPOs are also coming in? Well, the IPOs do tend to gather a much mass, especially when the markets are booming. So we see that they are oversubscribed and are at higher premiums at that point of time. But whenever the markets show volatility or there are certain external factors which play an important role in terms of the market's movement, then thereby we do see that the overall volatility affects the IPO subscription also. So it's not that the days have gone away, but it is definitely that the markets are being very cautious in terms of selecting the IPOs and identifying them as overvalued or undervalued. It's not like any IPO will make a good premium. So do you think that by and large they are being overpriced or somewhere the valuation is being overestimated? Well, in some cases, we can say that the valuations were overestimated, but not in all cases, because a lot of times it also depends upon the overall market movement and the sentiments which are weighed by different external factors. So when we talk about certain IPOs, they have not performed very well on their listing days, not primarily because they were overvalued, but primarily because they were sentiments other than the macroeconomic sentiments which would have weighed it to a higher level. Right. जी, महंगाई इन्फ्लेशन के कल आंकड़े आए और बहुत ज्यादा महंगाई का जो 15.8% WPI पहुंच गई, और जो आप जियोपॉलिटिकल टेंशन की आप बात कर रही हैं,
इन सब स्थितियों को देखते हुए अब शेयर बाजार में क्या ये उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी हम आने वाले वक्त में इसको बनने देखेंगे या फिर कुछ स्थायित्व आना शुरू होगा? जी देखिए, जैसे जैसे इन्फ्लेशन के प्रेशर बढ़ेगा, खास तौर पे क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, वैसे वैसे हम बिकवाली देख सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि एफआईआईज ने रिसेंटली काफी हद तक सेल आउट किया है, जिसका भी असर हमें नजर आ रहा है। जब भी फेडरल रिजर्व बैंक अपने रेट्स बढ़ाएगा और आगे और टाइटनिंग की बात करेगा, वहां पे भी हम एफआईआईज का सेल ऑफ देखेंगे। तो ये मार्केट वॉलेटिलिटी को डेफिनेटली क्रिएट करेगा और एक बायर सेंटिमेंट के ऊपर भी हावी रहेगा, क्योंकि बायर सेंटिमेंट की जगह सेलर सेंटिमेंट रहेगा। तो हम ये कहें कि जो वॉलेटिलिटी है वो थम जाएगी या पूरी स्टेबल हो जाएगी, वो शायद अभी मुश्किल होगा। पर क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, जैसे ग्रोथ रेट है जिसे हम कहते हैं 8.2% के आसपास माना जा रहा है जो होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 बिलियन से ऊपर की तरफ, आपका जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट की फिस्कल सपोर्ट है, चाहे वो पीआईएल स्कीम के द्वारा हो या किसी और माध्यम से हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें या और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, या कैपेक्स जो 34% इंक्रीज करने की बात है, वो सब एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं इकोनॉमी को। तो मार्केट्स पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहेंगी, पर वो वॉलेटाइल रहेंगी और सेलर्स जो है हैवी रहेंगे बायर्स के ऊपर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है। कौन से ऐसे सेक्टर्स आप देखती हैं जो इन्फ्लेशन इम्यून आपको लगते हैं? जी देखिए, आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसे सेक्टर्स रहते हैं जो इन्फ्लेशन इम्यून रहते हैं। और खास तौर पे अगर आप देखें तो जो वेरिएबल स्टॉक्स, वेरिएबल एसेट्स होते हैं, जैसे हम स्टॉक्स की बात करें या हम फिजिकल एसेट्स गोल्ड या रियल एस्टेट की बात करें, वो इन्फ्लेशन में वैल्यू गेन करते हैं। तो ये निवेश के लिए माध्यम रहते हैं लोगों के लिए। कॉर्पोरेट्स भी क्योंकि इन्फ्लेशन को अपनी प्राइसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर वो डिमांड को पूरी तरीके से मीट आउट कर पाए। पर अगर डिमांड नहीं होगी तो वहां पे दिक्कत आएगी। Dr. Yamini, we talk of volatility now. It's become a part of our jargon of the market. And, sometimes for the ordinary investor, the common layperson, so to say, the term volatility, crash, rise, slump, what is the band which is considered volatility? What is the band which is considered correction? What is a slump and what is a skyrocketing rise? Well, overall, when we see the trend for a market, we usually see as to which direction the market is moving. Overall, in the market, is it moving upwards or it is moving downwards? That is what we call as a primary trend. So the markets have been on a downward trend lately because they have touched 52,000 mark, but not for an year or so. Overall, there has been an upward trend in the market, but lately there have been a downward trend because of the inflation pressure and because of the crude oil prices, which have been on a rise. Also, when we look at secondary corrections, we talk about secondary corrections again in the market over a period of time, a certain period of time, which may be a month or two, which is there. When we talk about tertiary corrections, we are talking about intraday trades, whereby the daily trades, the movements up and down make a difference. So again, technical indicators usually will identify 21-day moving average and 200-day moving averages as one of the bands which offer resistance and support to the stock markets, which basically means that which is the highest level which the stock markets will reach or which is the lowest level. Anytime there is a breach, then people then decide whether there is a new direction which the stock markets is picking up. और अब डाल लेते हैं रुपए के प्रदर्शन पर नजर। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे कमजोर होकर 77 रुपए 58 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.21% बढ़कर 103.58 पर चल रहा था। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, पहले लेते हैं ब्रेक।
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Dr. Yamini, before we went in for the break, Vishal spoke with you about we read out the item on the rupee. Now we're seeing that overall definitely there's a weakening of the rupee. What is the effect going to be on consumer products as the industry? Because they will raise prices and they will move on. But for the end user and inflation, we're looking at, of course, WPI, but this retail inflation is bound to follow WPI inflation. So for the consumer, do you really feel tough times are ahead? Well, yes, till the time the inflation pressure continues and it gets percolated into food items as well as other items, difficulties would be there for the consumers. Already the petrol prices and the diesel prices are at a higher level. And there have been circumstances when there has been a rise on a consecutive basis, which has led to a very high level at the moment. And if the crude oil prices in the international market, which are at 114 right now, touch to a higher level, they can be a further rise. Also, there is no particular resolve that we can see for the Ukraine and Russian war. And the sanctions which are being further put on Russia can create more problems. The COVID situation is another problem which is causing these global supply chain disruptions. So the supply side is getting affected overall, which is becoming the input costs for all goods. And as a result, most of the goods will cost at a higher price, and that will lead or will pinch the budgets of many people. Right. And while this is pinching news, we definitely have some good news in terms of tax collection. The union government has collected 14,10,000 crore rupees in the form of direct taxes this year. Addressing a seminar on tax deduction at source, TDS, organized by ASSOCHAM in New Delhi, Joint Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Kamlesh C. Varshney, said this shows that people are becoming more responsible for the development of the nation by paying taxes. Mr. Varshney also said that tax is used in creating jobs, infrastructure, and holistic development of the country. Dr. Yamini, we know that government expenditure played a huge role in actually buffering up the economy during the difficult times in COVID. Do you think that is likely to continue? Because now pressures are different on the economy. Well, the fiscal support has always been there, especially during the COVID period with Atmanirbhar Abhiyan 1, 2 and 3, where special care was taken for the vulnerable groups and the weaker section of the society. With free ration, which was provided for a larger period of time so that people do not go hungry, was an important fiscal support. Also, what was at the same time taken care of was a big backbone of the economy, which is the MSMEs and the women. So the fiscal support in that manner will continue to be there in terms of the support that is there. What further supported was that there was a capital expenditure increase, which was about 34%. And there was investments that were mapped up for infrastructure, whether it was for railways, roads, ports, or other infrastructure. And also there was support that was given through the PIL scheme to 13 sectors. Right. So which was a further support. Also the National Infrastructure Pipeline. So these are all the fiscal supports which keep the economy, at a higher level, or maintaining an aplomb to them so that there are no difficult times that can be seen, or people are supported in every possible manner. Mudra Yojana
or the other credit schemes that were given, the emergency credit lines that were offered, provided the liquidity support. At the same time, the monetary support was also provided by RBI because it did not raise the rates as it observed that Fed had raised the rate. But when the inflation became out of control or beyond a particular level, they had to come in to suck the liquidity so that the inflation does not go beyond the control levels. So we have seen support from the monetary side as well as the fiscal side in all forms. So this now there is talk, and today the Monetary Policy Committee also took out this thing that there is going to be more pressure to actually raise the rate. Your views? Well, we've already got the WPI figures, which is in double digits, 15%, quite the highest that we have observed for so long. Also, if you look at the CPI figures, which is at 7.5% so far, are a matter of concern because the target rates in which the RBI is trying to manage is 4 to 6%. So it goes much beyond the threshold level. If inflation is not controlled, all the other things will become difficult in the economy, and the growth rates that you're wanting to achieve will automatically come down, and the standards of living for people at large will automatically slide down. So it is necessary to control inflation. Another important thing is that inflation is a tax on the poor, because they are unable to meet their requirements, and especially when they're hand to mouth. They are not even able to meet their basic amenities. So that becomes a more serious concern. Fiscal support in terms of providing free ration or the public distribution system which provides for the necessities that are there, they are good support, but they may not reach the entire people who may still need more support from the government, because the overall budgets of the government continue to remain limited to the exercise that they can do. जी, आरबीआई की जो रेट हाइक्स की बात आप कर रही हैं, तो उसमें रेट हाइक से ये जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो बात हो रही है, उससे क्या एमएसएमई सेक्टर की लोन लेने की कैपेसिटी प्रभावित होगी कहीं ना कहीं, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, जिसकी भी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही बढ़ेंगे आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा उस पैसे पे जो आपने पैसा उठाया है, और क्योंकि वो ब्याज दर बढ़ जाता है, किसी की क्षमता उस ब्याज दर को देने की कम हो जाती है और वो इसलिए कम पैसा उठाएगा मार्केट से अगर वो नहीं दे पाएगा। तो देखा जाता है जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे वो सभी सेक्टर्स को अफेक्ट करेंगे, चाहे वो कंज्यूमर मार्केट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट में हो, चाहे वो किसी भी मार्केट में हो, और एमएसएमईज को भी इफेक्ट करेंगे। पर ये खास तौर पे देखना होगा कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस ऑफर्ड हैं या जो मुद्रा योजना के द्वारा क्रेडिट ऑफर्ड है, उसमें कितने एमएसएमईज अपने आप को बेनिफिट कर पाते हैं। जी, और अब खबर सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जुड़ी हुई। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम, कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डाक विभाग ने सरकारी खरीद में अंतिम स्तर के खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह, कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार राकेश और डाक विभाग के पार्सल निदेशालय के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार रॉय ने नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश भर में लगभग 4,50,000 सामान्य सेवा केंद्रों और लगभग 1,50,000 डाकघरों को अंतिम स्तर के सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि इस साझेदारी से सामान्य सेवा केंद्रों और डाकघरों के ऑनलाइन और बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए जीईएम पर अंतिम स्तर के हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। कितना महत्वपूर्ण निर्णय है लास्ट माइल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए ये? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखें तो जो छोटे और मझौले व्यापारी हैं वो अपना जो सामान है उसको बेचने के लिए मार्केट प्लेस ढूंढते रहते हैं, और जेम एक ऐसा पोर्टल है जिसमें वो एक मार्केट प्लेस दे रहा है। जहां तक सरकार की बात है, वो 20% अपनी प्रोक्योरमेंट
MSMEs के द्वारा निर्धारित करती है कि हम उनसे लेंगे। जब MSMEs इस जेम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो उस व्यापार के लिए भी आगे आते हैं और धीरे धीरे क्योंकि सभी लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो आगे से आगे आकर के जुड़े, तो उससे उनकी बेहतर आय कमाने की जो दृष्टि है वो बढ़ जाती है और उनका जो कमाने का जरिया है वो भी बढ़ जाता है। So there is also, and I think it's a wonderful effort to use the postal department for that, because there is a connection between the last mile, actually, the house-to-house delivery, and it's an old linkage anyway, historically also. Do you really think, because the participation in the e-market for many last-mile users is not as much as we would like it to be, so how effective would this be in actually increasing the span? Post offices are a very good medium to reach out to the poorest of the poor in the rural, especially the rural sector, which makes small as well as important goods which may be relevant for the economy or may not have seen the necessary supply chains which are needed or the logistics which are needed for them to support their sales. So when the post offices are roped in, then since they can reach out to each and every person in a village, that will help them to know about this e-marketplace and would get them to establish their links with not only the marketplace but also with the government procurement houses which may be looking at different orders from different people. Right. और अब बात एशियाई शेयर बाजारों की। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% और जापान का निकेई 0.9% की बढ़त में रहे। हांगकांग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों 0.2% चढ़े। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार में हल्के नुकसान में चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 0.3% लुढ़क गया। जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैग दोनों 0.2% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। A quick look at the U.S. markets. The U.S. share markets finished sharply higher yesterday, lifted by Apple, Tesla, and other mega-cap growth stocks after strong retail sales in April eased worries about slowing economic growth. The Dow Jones Industrial Average Index added 1.3%, the S&P 500 climbed 2%, and the Nasdaq Composite surged 2.8%. Oil prices today rose on expectations that easing COVID-19 restrictions in China will boost demand, and as supply concerns grew, the crude price rose around 2% in intraday trade. Brent crude was trading at around $114 per barrel, while WTI crude was trading around $115.30 per barrel. ये बात अब गोल्ड की करते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना आज 230 रुपए सस्ता होकर 49,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 230 रुपए टूटकर 60,925 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,808.10 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $21.60 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के इस दौर में गोल्ड में आपको क्या संभावनाएं लगती हैं इस साल के अंत तक? जी देखिए, जितनी भी वॉलेटिलिटी रहेगी और जब भी इन्फ्लेशन रहेगा, गोल्ड में निवेश बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा निवेश का माध्यम रहता है और उस पे रिटर्न्स भी लोगों को काफी अच्छे मिल जाते हैं। We're talking of oil prices now, and now they're saying that I think Brent crude for the first time, American oil has become, more expensive than Brent crude. Is this a shift that you see? Is this a design policy in terms of oil prices? Well, overall, it will depend upon the supply and demand that is there. And whenever we talk about these prices, they determine how the market is really taking the oil. So it may be a difference in terms of how people are shifting their demand from one oil to another. So that is a certain amount of a reflection in the prices. Right. जी, डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आप शामिल हुई और इतने विषयों पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Dr. Yamini. And now before we close, a reminder of the headlines.
Key domestic stock indices log marginal losses. Sensex closes near 54,200 points. Nifty slips below 16,250 level. Rupee weakens to 77 rupees and 58 paise against the dollar. And Brent crude prices hover around $114 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.